पढ़ के आए हो? आया ना? ठीक है ना, तेरा तो बात रहेगा ना, बाकी का तो कुछ नहीं पता। अरे हाँ या ना, सुना ही नहीं दे रहा है। मतलब ना, तुम्हारा बर्थडे है, एनिवर्सरी, मम्मी डैडी की, है ना? तुम्हारी भी होती क्या एनिवर्सरी? क्या बात है, इंडिया में चाइल्ड मैरिज भी अलाउड कर देते हैं चुपके। मतलब क्लास के सेकेंड डे पे अगर मैंने क्वेश्चन पूछा, अगर आंसर नहीं हुआ तो मैं आपके घर पे कितना अच्छे अच्छे बॉम्ब डालूंगा। यस बॉयज एंड गर्ल्स हो गया। हाथ स्वेल हुआ है, आंख खराब नहीं हुई। यू हैव अ रीजन सर, स्वेलिंग थी सर, इसके लिए पढ़ाई नहीं हुई, ऐसा कुछ है? कितने जन ने ईमानदारी में पढ़ा? हाथ उठा दो, ईमानदारी में पढ़ के आए हो? 1 2 3 4 5 6 7। बैठो बैठो फिलहाल। ओके, लास्ट के कंप्लीट किया था, वाटर जीन्स हो गया था। स्टार्ट विद नेक्स्ट पार्ट, नीड फॉर सेल डिवीजन, और उसके आगे फिर पढ़ना है। सर आज के दिन में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, पर नेक्स्ट लेक्चर में अगर फिर ब्लैंक आया और मैंने पूछा तो आई वुड शो यू क्या व्हाट एंड हाउ वर्स आई कैन। तो 9 में जितना देखा नहीं होगा उसका पूरा एक साथ ही पिक्चर दिखा दूंगा। जिसका एक हाथ स्वेल हुआ है, बाकी 2-3 भी एक साथ हो जाएंगे। कई जन का हाथ पैर तोड़ने में भी काफी है, थोड़ा सा करना पड़ेगा। Elephant stamping on the. Okay, we start the next part. That is need for cell division. So before I start, please close your books. We have completed the first part of the chapter, which was talking about structure of chromosomes. So अपन ने structure of chromosome में पढ़ा था what is chromosome, who discovered chromosome, which year, which animal. फिर अपन ने पढ़ा था chromatin fiber made up of DNA and chromatase histones. फिर अपन ने discovery of DNA, Rosalind Franklin, Watson and Crick, उसके बाद उसका type, and then we talk about it is made up of repeated nucleotide, made up of 3 parts, phosphate, sugar, nitrogenous base, made up of 4 parts, ATGC. Okay, उसका orientation दिखा था, उसका diagram draw किया था, सब कुछ किया था, हाँ या ना? वो ड्रॉ करने के लिए नहीं आता, मोस्टली लेबल करने के लिए आता है। कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस, एडिनाइन, विनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन, ऐसा बकवास किया था। Okay, then we studied about what are genes. Okay, sequence of nucleotide which code for a particular protein inside a particular character or expressed in a particular form of character is known as genes. यहाँ तक फर्स्ट पार्ट था, बेसिकली क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में सेंट्रोमियर स्ट्रक्चर अपन ने देखा था, दैट कंप्लीट्स द फर्स्ट हाफ। अब सेकंड पार्ट है इज इन टर्म्स ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो फर्स्ट पार्ट
5 मिनट पहले 2 मिनट पहले मैं तुझसे उर्दू में कहा था। You can definitely cross check me कैसा wrong पढ़ा रहे या right पढ़ा रहे बाद में, and you can definitely say sir आपने wrong पढ़ाया था, I don't mind, okay? But chances of that would be less. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि no, human हूँ, बुढ़ा होते जा रहा हूँ, so errors are possible, but फिलहाल शायद इतना नहीं होगा, okay? और 10 साल के बाद शायद होगा या 1 साल के बाद हो सकता है. So we go ahead with the part need for cell division. When I say need for cell division, meaning is why does a cell divide or why do a cell divide? So what is the need for a cell to divide? Growth, repair, replacement and reproduction. School में हो गया था, तभी भी अपन पढ़ नहीं रहे. So there are reasons why we do division is growth, repair, replacement and reproduction. Okay, I'm not writing complete part, book में दिया होगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं. So when I say growth, every cell or every living organism start its life from a single cell. And what is it? Zygote. Zygote. Are we single cell or multicellular? Yes, ये single cell है, हम multicellular है. So we all are multicellular. So our life starts from a zygote. Zygote keep on dividing to form बच्चा पैदा हो गया. Okay, so that's what growth is. Okay, whether it is a animal or if I take about plant, now obviously it also forms what we say as embryo, then plantlet, then a plant, ultimately a tree. So that also is showing a growth. Then comes the next R, that is either you say repair or reproduction or replacement. So pehla repair. So what is repair? Obviously in our entire life there is always a wear and tear occurring in our body. Okay, whether it is wear and tear within the body, outside the body, etc. There is obviously there is a required to repair it. Like they are given a proper typical example in your book is when you fall apart, you fall down. There sometimes you have a fracture. Okay, so the bone breaks, and then we go to doctor and put a glue. Fevicol लगा के चिपका देते. प्लास्टर लगा के चिपका देते. हाँ, तो प्लास्टर होल्ड करता है, तो चिपकन को दे. Done. The plaster doesn't do the functioning of sticking. Okay, अगर ऐसा होता तो फेविकॉल ही लगा देता बेटर. Okay, the plaster only sees to it that doesn't move. Okay, वो alignment को सिर्फ रख रहा है. अगर alignment move हो गया तो ऐसा होगा. The bone will go like this. Okay, and then it will pain for the life. So in order to align first, and then at that area where the crack was created, वहाँ पे नए cell develop होंगे. So they will divide and ultimately keep on dividing, and they join. So वापस one piece में आ गया. That is what we say as repair. Third is replacement. So why do we need to replace a cell? Nobody is born immortal. Okay, so kabhi na kabhi jana hai. So all cells have some or the other lifespan. Example given in your book is RBC. 120 days is the lifespan. After 120 days, expiry aa chuki hai. They will go to the liver, spleen, etc. Destructed, and same number has to be replaced. So how many RBCs are destroyed? 2 million RBCs per are destroyed. तो पहला चीज जो fill in the blanks या MCQ के लिए number of RBCs destroyed per second, ये बाद में highlight कर लेना. Okay, so ये हुआ replacement. Okay, second last bench middle boy, कुछ disturbing है? डिस्टर्ब हो रहा है?
सेकेंड लास्ट बेंच मिडल बॉय, इधर बॉय है नहीं तो ही बचा। हाँ, कुछ प्रॉब्लम है, गप्पे मारने हैं, मिलना है उसको, नहीं ना? व्हाट इज इट? बोलो। चला सर, आप 2 मिलियन सेल्स बोल लेना। एक मिनट रुक जरा। कुछ भी पूछ सकते हो। सोच के पहला तो बोलो कुछ मिलियन कौन पढ़ा था? आई पासवर्ड पेपर याद है? याद है ना? एक तुझे ऑफिशियल सुपर सबसे बस उल्टी बता पर तू क्यों बता रहा है? ये मत बोलना आगे आई ये बकवास को नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा बकवास कुछ नहीं पूछ सकते। क्या बोल बाबा? सर आप 2 मिलियन सेल्स बोलना। हाँ पहला 40 मार्क ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर किसी को टाइम मिला तो इसको प्यार से एक्सप्लेन कर, बिकॉज एक्सेप्शन कैटेगरी आई कांट हैंडल। आ गया ना? नेक्स्ट टाइम अगर पूछा ना तो मैं तुझे अच्छे से बताऊंगा, ठीक है? रीजन देयर आई कांट डू एनीथिंग। मैं तुझे इन्फॉर्म कर रहा हूँ। So I think then repair replacement. Last point, reproduction. Every cell need to divide to undergo reproduction in terms of asexual reproduction. Because when I say asexual reproduction, the cell simply divides, amoeba divides, bacteria divides, paramecium divides to form two daughter cells. Parent गायब हो जाता है, अब वो daughter बन जाता है. So practically if I say in a unicellular asexual reproducing organisms, we say they are almost immortal because वो मरते नहीं है, वो reproduce होते हैं into daughter cells, फिर आगे वापस daughter cells. तो कहीं ना कहीं you can say they continue in the form of daughter cells, and that is why they say as immortal. पर immortal कभी word होता नहीं है. Reason they may divide, but कहीं ना कहीं if there is death in terms of starvation or conditions are not proper, so they will die without reproduction also. Am I clear? So that is the 4 things for which the cell need to divide. कोई doubt है यहाँ तक? Everybody? Okay. So we go ahead with the next part. The next part is straight away we jump on to now is the cell cycle. Okay? Cell cycle और उसके बाद cell division पे जाएगा. So when I say cell cycle, what is cell cycle? The cyclic event occurring between 2 consecutive division to form 2 daughter cells. So cyclic event wherein a cell divides to form 2 daughter cells is known as cell cycle. Now this cell cycle consists of various phases. Now what are the various phases of cell cycle? पहला जहां पे सेल डिवाइड हो रहा है, that phase is known as mitosis or simply cell division. Okay, अपन यहाँ पे एग्जांपल पकड़ रहे हैं mitosis. So in the mitosis, cell is dividing. Once it's divided, because we said between 2 consecutive cell division leading to form 2 daughter cells, okay, is what we say cell cycle. A cyclic event in a cell wherein it leads to formation of 2 daughter cells is known as cell cycle. तो माइटोसिस से स्टार्ट हो जाता है आपका सेल साइकिल का फर्स्ट फेज, दैट इज
G1. The first phase in the cell cycle is G1. Okay, first growth phase, followed by S phase. What is S phase? Synthesis phase. Then followed by G2 phase, second growth phase. Ends up then the cell division, where it will again divide. So this entire part is what I mean by cell cycle. Am I clear? Yes. Exam point of view. Okay, then we are moving on the exam point of view. Chances of drawing less than 1%. Draw करने के chances ना के बराबर होगा. Diagram दिया जाएगा, questions based upon the diagram. So they might give you A, B, C. What is A? What is B? What is C? Or इनके बारे में what is happening in the A part, what is happening in the B part, what is significance of A, B part, ये पूछेंगे ज़्यादा. So we first try to understand what is G1 phase, first growth phase or growth phase 1. Now what happens in the growth phase 1? There is synthesis of proteins and RNA. Now why proteins and RNA? जब माइटोसिस में क्या हो रहा है? Cell is dividing. So we take an example. एक cell है जो divide हो रहा है. Mitosis है, so obviously chromosome number remains same. अगर 46 है तो daughter cells में भी 46 है. अगर 50 है तो daughter cells में भी 50 है. So this cell is undergoing cell division to form two daughter cells. Okay, what's the difference between parent and daughter cells? Diagram में क्या differ दिखता है? Size. Anything else? No. Sir, ये बड़ा है और ये छोटा है. So this cell which is formed will now enter into the G1 phase. उसको divide होने के लिए वापस बड़े size में आना है. It has to, it's like you are born. Can you reproduce immediately? You need to mature, grow, come to puberty, then you are capable of reproducing. Same over here. अभी तो पैदा हुआ है. अब इसको adult stage में जाना है. So it has to gain the size, and this gain of size occurs in the cytoplasm. Can it be in terms of DNA? No. So यहाँ पे सिर्फ cytoplasm content बनना है. So this where protein and RNA are synthesized. The moment protein and RNA synthesize, it will increase the cytoplasmic content. Is it clear? Yes. Now, at the same time, एक तो protein और RNA बना, दूसरा the various cell organelles, specifically mitochondria and chloroplast, they also divide and are going into the organs. Why mitochondria and chloroplast? Why not endoplasmic reticulum, Golgi bodies, other organelles? वो भी तो चाहिए ना. So why mitochondria and chloroplast have their own DNA? Okay, a cell to divide has to have a DNA. और mitochondria, chloroplast the only cell organelles apart from nucleus. इनके पास खुद का DNA है. So they can simply divide. एक है, दो में divide होगा, एक तेरे पास, एक तेरे पास. So that's mitochondria and chloroplast. Not mentioned in the books, but still to understand is the other cell organelles. Endoplasmic reticulum है, Golgi bodies है, ये सब कुछ है. Then they would be simply reshuffled. मतलब it's a simple way. क्या I have two sons, मान लो कि कल मैं गया, पीछे बहुत प्रॉपर्टी छोड़ के चला गया, तो अपन टीवी पे देखते ही है. क्या होता है? बड़े बेटे को मिलता है, ऐसा बोला. वो क्या स्पेशल है? छोटा बेटा बोलेगा हरिश्चंद्र की औलाद, गांधी की तरह लेके जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए. नो, दे विल फाइट. ओके, बट देयर इज अ बेटर ऑप्शन इज, अगर मैं जाते हो बिल्ड किया, भाई मेरे 2 फ्लैट्स है, एक फ्लैट तुझको, एक फ्लैट तुझको. सिंपल है. अभी पूरे इसमें एक ही टीवी है, तो आधा तोड़ के तू लेके जा, आधा तोड़ के तू लेके जा.
Is it like this? No. Very simple ना. अच्छा टीवी है, चल इसने ले लिया. फ्रिज था एक, तू ले ले. एक तेरे पास, एक तेरे पास. Same over here. The organelles which are there, they will redistribute themselves. Some will get one, तो जो नहीं मिला वो बनेगा, synthesize करेगा. इसको कुछ और मिला वो और synthesize करेगा. So obviously the synthesis of various cell organelles. Okay? ये सब करने से क्या हो रहा है? What is increasing? The cytoplasmic content. ये अब cytoplasm बड़ा हुआ है, मतलब by the end the cell is वो parent size क्या है? अब इतना बड़ा हो गया पर ठीक है, समझ लेना. क्या जो parent size का था वही size का cell भी आ गया. Am I clear? Everybody? Yes, sir. Okay. Now moving ahead. With this type of cell, there is another option. One, the cell may undergo a phase, which is known as G0. What is the name? आपने किसने बोला? Resting phase. R phase भी कहा जाता है. Resting phase कहा जाता है. Q0 भी कहा जाता है, which is referred as quiescent phase. Quiescent means resting. Okay? तो अलग-अलग रेफरेंस बुक पे आपको अलग-अलग मिलेगा. For us, G0 or resting phase is where the cell first undergoes G1. Now it moves out of the cell cycle. Cell cycle से बाहर निकलता है to have a rest. Okay? अब यहाँ पे option है. When it comes out of the cell cycle for a rest, it may take permanent rest, or it may take rest for some time, or it may continue to go ahead. Simple way. आप एक रेस में पार्ट ले रहे हो, लगा वहां पे रुक गए, out of the, मतलब आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हो. You come out on track, no ways. Second, लगा एक सेकेंड के रुके, 2 मिनट के रुके, and you think अभी मैं हार चुका हूं, but I'll complete the race. There are many people seen this. क्या वो अपना रेस कंप्लीट कर लेते, भले लास्ट आया. What is happening? He's come out for some time, but again he has completed. तो आगे बढ़ा. Third, पूरा रेस कंटिन्यू कर रहे हैं. But there are also 3 options. So when it comes out, and it is resting. Some may not come out, it may continue going ahead. So when they go ahead, they enter into the next phase. What is the next phase? Synthesis phase. Now what is synthesized over here? The synthesis of DNA. Proper word में there is a replication of DNA. Another proper word, there is a duplication of DNA. Rather using word duplication, use the word replication, because replication technical word. Duplication, synthesis of DNA is generalized. Okay, so synthesis of DNA bracket में replication, दोनों आ गए. Am I clear? So what is happening over here? The DNA is doubling itself. यहाँ पे DNA कितना था? 46 था. अपन ह्यूमन का पकड़ते हैं. तो यहाँ पे कितना होगा? 92. डबल होगा ना? 46 का 92 होगा. Why? Because जब वो डिवाइड होगा तो it has to give 2 again ना. एक ही पेन है और 2 जन को देना है तो पॉसिबल नहीं है. 2 पेन है तभी दूंगा मैं पेन. यहाँ पे डबल होगा तब वो पास कर पाएगा अपलोड से. तो यहाँ पे डबल हुआ. Then it continues to go ahead in the last phase, G2 phase, second growth phase. What happens in second growth phase? तो मुंह बंद ही रखो. What is synthesized over here? यहाँ पे क्या? RNA and protein. Good. RNA and protein. So मेरे पास एडवांटेज है.
तो ऑनलाइन है, सामने बुक होगा. Okay, children, here there is synthesis of RNA and proteins. कहीं लिखा था अपन ने ये? इधर इधर. So can I do same exactly like जीवन? आया ना? Okay. अब children, इस पॉइंट पे आपके मार्क्स जाएंगे. वन वर्ड जो आपने लिए कभी वैल्यू नहीं था, यहाँ पे उसका वैल्यू बढ़ेगा. द आंसर इज मोर RNA and proteins are very good. Netflix. तो क्या करना है? नॉर्मल प्लान की क्या है? इसका बैक ऐड है क्या? स्ट्रीमिंग चैनल है ना? Okay. So we have, so यहाँ पे board is very specific. More RNA and proteins are synthesized. You may write protein and RNA synthesis. Board will not give you marks. Okay. The keyword is more RNA and proteins are synthesized. Now, what's the reason for this? Not required, just for knowledge. यहाँ पे प्रोटीन RNA बना, काय के लिए था? Growth size बढ़ा रहा है, to bring it to the parent size. Okay. अब वो ऑलरेडी बढ़ चुका है ना, वापिस क्यों बन रहा है? एडिशनल क्या बनाता है? You are right. Reproduce होने के लिए, but it's something which is formed over there. What is the structure which divides a cell? Structure which divides the cell. Then, आप मैं आपको पूछ रहा हूं कि आपको पेपर टेयर करना है या कट करना है, तो आप मुझे क्या चाहिए? तो आप बोले सर पेपर चाहिए, सीजर चाहिए. तो सेल डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए? The spindle fibers. Okay, then spindle fibers are protein. और वो spindle fibers इस प्रोटीन और RNA से बन गया. तो यहाँ पे उस डिविजन apparatus जो होता है, spindle fibers, esters वगैरह, वो सब इनसे बनने वाला है. Because volume size तो बढ़ चुका है. Okay, अब हमें सीजर का काम करवाना, तो उसके जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे आए. Now once this is formed, understand this part. यहाँ पे ग्रोथ हुआ, यहाँ पे DNA डबल हुआ, okay? यहाँ पे फिर साइटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ because of this more RNA protein. तो इसमें DNA और साइटोप्लाज्म का रेशियो चेंज हो जाता है. Okay? The moment this DNA and cytoplasm ratio changes, it triggers a mechanism for a cell to divide. कोई जाके सेल को बोलता नहीं भाई साहब अभी डिवाइड कर ली. Okay? Yeah, we don't say through a divide, let's divide. It is this ratio of DNA and cytoplasm changes which triggers the cell to start division. And this is what I mean by the cell cycle. Am I clear? Okay. Now, from one cell division to the second consecutive cell division, in between this phase is known as interphase. So what exactly is interphase? Interphase is nothing but the phase between two subsequent cell division, which is also sometimes referred as resting phase.
अब आपके बुक में प्रॉपरली करेक्ट होके आया हुआ है, पर पुराने 2-3 साल पहले देयर वाज अ रॉन्ग स्प्रेड ओवर देयर, तो उनका थोड़ा इशू था अबाउट रेस्टिंग फेस। तो अब उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है इंटरफेस इज रिफर्ड एज रेस्टिंग फेस बट एक्चुअली नॉट। इन रियल टर्म्स यहाँ पे सेल इज हाईली एक्टिव, यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है डीएनए का, यहाँ पे वापस डीएनए मतलब आरएनए और प्रोटीन। सो इंटरनली इट इज हाईली एक्टिव, बट बाहर से हमें लग रहा है कि इट इज जस्ट रेस्टिंग। सो इट इज जस्ट सेड एज अ रेस्टिंग फेस बट नॉट टू बी कंफ्यूज विद दिस फेस। ओके, ये रेस्टिंग आउट होता है, सेल साइकिल से बाहर आया, और ये सिर्फ बोलने के लिए है, बट इज इट एक्चुअली रेस्टिंग? नो, इट इज हाईली एक्टिव ड्यूरिंग द इंटरफेस। Am I clear? Everybody? कोई डाउट है? Then, अगर ये क्वेश्चन आया तो इसके मार्क्स पूरे आने चाहिए, बिकॉज इसमें पूछेंगे क्या, व्हाट इज जीवन, व्हाट हैपेंस इन द जीवन, प्रोटीन सिंथेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट डिवाइड, RSM ऑर्गेनेल इज वेरी सेपरेट। ओके, व्हाट हैपेंस इन S phase? From DNA, that is replication of DNA, duplication of DNA. What happens in G2? More RNA and proteins are synthesized. Then it enters into the cell. What is the phase known as between two subsequent cell divisions? Interphase. It is actually resting or it is highly active? You can ask for a few reasons. It is referred as resting but still referred as a highly active stage. Why? Because internally the cell is undergoing G1, S and G2. So obviously there are lot of things form, synthesize or double. That is why highly active phase. Clear? Okay. Next under this heading is how long the cell cycle will continue, or is the cell cycle go on endlessly? Cell cycle chalte hi rehta hai, will it stop or whether it will be what? And the answer is no. The cell cycle doesn't go on working endlessly. Okay, it has to have certain breaks, stoppage. So what is that stoppage? यहाँ पे stoppage के लिए अलग अलग examples दिए। अब ये जितने भी examples है, ये सब के सब example MCQ या it would be match the column या example. Okay. So I want you to open your textbook for that purpose. Come to your page number 12. 12 में अगर आप देखोगे for reproduction के बाद cell cycle लिखा हुआ है, division and redivide, उसके नीचे orange box डाला हुआ है, that would be the definition of cell cycle. उसके बाद इंटरफेस लिखा हुआ है, इंटरफेस को एक्सप्लेन किया हुआ है, then first growth phase, then second phase and second growth phase. then जो जितना भी कंटेंट लिखा है वहां पे वो पढ़ने से अच्छा है नीचे डायग्राम दिया हुआ, डायग्राम में बॉक्सेस डाले रहे, वो बॉक्सेस कर लिया और हो गया। तो वो इतना बकवास पढ़ने से अच्छा वो 3 पॉइंट या 2 पॉइंट लिखे, दैट इज मोर देन इनफ फॉर अस फॉर एग्जाम। Am I clear? उसके बाद लिखा है फॉर्मेशन ऑफ द न्यू डीएनए, ये अपन स्किप कर रहे हैं। I would teach after the chapter, मतलब इसका कोई जरूरत नहीं, तो नॉट रियली रिक्वायर्ड बिकॉज़ इससे कुछ नहीं आ रहा है, तो अपन इसको लास्ट में करना है। Then next heading they given is can the cell cycle go on endlessly? अब यहाँ पे no, at some point it stops permanently लिखा है, वो ठीक है, वो पढ़ लेना। उसके बाद एक ऑरेंज बॉक्स आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सबके एग्जांपल याद है। तो फर्स्ट एग्जांपल, सेल ऑफ द आइलैंड्स, ब्रेन एंड नर्व सेल्स एंड नंबर ऑफ सेल्स डिवाइड ओनली वंस इन द लाइफ टाइम। लाइफ टाइम में एक ही बार न्यूरॉन डिवाइड होता है, और वो कब होता है? एट टाइम ऑफ योर बर्थ, आप बनते हो, when you are in embryological stage, birth भी बोलेगा तो भी बाद में होता है। So when you are in the embryo stage, that time neuron बनता है।
उसके बाद सिर्फ ग्रो होता है, okay? And then cannot divide. चल technically cannot divide, पर higher level पे there are certain neurons you can divide, उसके अलग types होते हैं. There are some associated cells जो divide होते हैं, but technically cut किया नया बनेगा ऐसा नहीं, so they cannot divide. Okay? Then they given you second example, skin cells. They are replaced every 2 weeks. then उसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है, आपको वो कुछ भी काम का नहीं है, आपको सिर्फ वो नंबर याद रखना है. न्यूरॉन, मसल सेल, लेंस, once in a lifetime. Skin cells twice a week, 2 weeks, twice a week. Okay. RBCs 120 days, lifespan है to 120 days. उसके बाद bone cells 10 years. तो सिर्फ figures पे ध्यान देना, बाकी उसमें जो बकवास लिखा है not interested to learn also. Then next, epithelial cells 5 days. Okay, epithelial कौन से होते हैं? Lining of the stomach, blood vessels, सब epithelial cells है. Even skin is also epidermal cells. Okay, तो यहाँ पे अलग layer होता था, तो इसके लिए ऊपर लिखा है 2 weeks. Okay, skin cell 2 weeks है. Then उसके बाद average life of the other gut cells is about 15 years. Gut क्या होता है? Stomach. स्टमक ही होता है, स्टमक ही होता है, स्टमक ही होता है. The entire alimentary canal is also known as gut. So right from the mouth से लेके anus तक पूरा gut बोलते हैं. Okay, so वहाँ पे लिखा other than the epithelial cells, other gut cells. तो epithelial cells निकाल दिया lining में, उसके बाद muscular cells है, और भी बहुत सारे cells है, layers है. The entire gut is made up of 4 layers of cells, higher level. So उन cells का average span is 15 years, and not only stomach forms the gut. Please remember this. Next, उसके बाद liver cells. Every 1 to 2 years. What is liver? A regenerating organ. I hope पता होगा. Okay, चल regenerating organ का ये मतलब नहीं है आज मेरा लीवर खराब हुआ, today's date was 29, तो सर 1 साल के बाद पूरा नया रिप्लेस हो जाएगा. okay, मतलब आफ्टर 1 year मेरा लीवर गायब होगा और नया आएगा. नो सन, every day some of the other cells will be formed and replaced. So after 1 year जो पुराने सेल्स पूरे एक्टिव हो जाएंगे और एक कंप्लीटली नया टाइप का सेल बनेगा, पर एक दिन में नहीं. इट इज प्रोलॉन्ग फॉर अ ईयर प्रोसेस. Then next, ऑरेंज बॉक्स खत्म हो गया. अब कम टू साइड पार्ट, वहां पे है गिवन यू मेरिस्टेमेटिक सेल्स. वर्ड हाईलाइट किया हुआ है, उसी को ध्यान देना है. नाइन्थ स्टैंडर्ड टिश्यू चैप्टर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, दे डिवाइड. यस सर. यस. Lateral or apical, so areas they divide continuously or stop dividing. The moment they stop, permanent cell. Good, 9 pass. Okay, means of pass. The meristematic cells, wherever they are present, they will continuously divide. Okay, whether it is the apical, whether it is lateral, whether it is cambium, whether it is intercalary, divide होते ही रहेंगे, पर एक पॉइंट पे आके वो स्टॉप हो जाए. The moment they stop, they are permanent cells. So वहां पे भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो स्टॉप हो. Is it clear? Next, फिर they are given you germinal cells. क्या लिखा है? Specialized germinal cells. What are germinal cells? Germinal cells, germ cells. Germ cells, gametes. Gametes, sperm and ova. So, are they continuously dividing? Yes. बनते रहते ना? But as per the requirement, depending upon animals to animals, or you can say in terms of organisms. Like females में, when is the ovum produced?
फीमेल्स में चलो, at what stage of the life is ovum produce in the females? 11 to 13. Girls को नहीं पता, boys को पता. That's why I said in the first lecture. भले बाकी कुछ ना हो, reproduction chapter is the most awaited and coveted. PhD holders. ठीक है? वहाँ पे और भी पता चलेगा बहुत कुछ. Okay. So, when is the sperm produced in the males? 13 to technical term. उस स्पीड को क्या बोलते हैं? Adolescence. एक कंफर्म करना, प्यूबर्टी एडोलेसेंस. प्यूबर्टी एडोलेसेंस इज नॉट द पार्ट. ओके गुड. चलो जनरल में बहुत अच्छा है. नेक्स्ट, व्हेन डज द ओवम स्टॉप प्रोड्यूसिंग? इज इट स्टॉपिंग और इट कंटिन्यूइंग? क्या मालूम है इसका एक्साइटमेंट कितना है? बोलने ना उसके कारण. गुड. 45 years के बाद. श्योर 45 years के अराउंड 40. ओके तो ज्यादा ही जल्दी हो गया इसका, पर ठीक है. 45 50 55 तक जा सकता है. दैट इज व्हाट वी से एज इट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग, टेक्निकली नोन एज स्पर्म प्रोड्यूसिंग स्टॉप. Really need to meet him. Okay, very good knowledge. Okay, reason because एक कहावत है नॉर्मली, क्या मर्द कभी बुढ़ा नहीं होता. बोलते हैं बोली में बोलते से sperm production never ends. Quantity and quality would be affected, but okay. Exception is always there. Okay? हो सकता है. So we don't want to comment on that part. Okay? But then, why I'm asking you this is, the reason is simple. Then, हमारे केस में प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, सेल डिवाइड हुआ प्यूबर्टी के बाद, और वो स्टॉप होगा मरने के बाद. It continues to a certain age. कम हुआ, yes, it may stop because of abnormalities, etc. So it's plus and minus. Females में चालू होता है और एंड भी होता है. okay? सिर्फ टेक्निकली एक चीज रॉन्ग, okay? जो शायद प्रॉपरली पढ़ा नहीं, जो 8 में पढ़ना चाहिए था, वो है eggs are not produced during the puberty. बोल दे, तू भी अपना बोल दे. बोल तेरे मन में वैसा रहेगा, ठीक है सर, मैंने नहीं बोला. Eggs are produced when you are in the fetal life and not when you are in the puberty. तो जब आप अपने मम्मी के वूम में 4th मंथ पे थे, तब प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था. okay? And not puberty. So start कहीं ना कहीं हुआ, end हो रहा है. So that's why germinal epithelium also divides and maybe stop at certain stage of life. ये तो ह्यूमन बीइंग का बारे में. कई एनिमल होते हैं इसको सीजनल ब्रीडर होते हैं, मतलब जब रिप्रोड्यूस करना होता है तब ही प्रोडक्शन करते हैं वगैरह. तो ऐसे भी है. नेक्स्ट है गिवन यू सेल प्रोडक्शन एंड सेल डेथ. ठीक है, ब्लू बॉक्स. वो ब्लू बॉक्स के जस्ट ऊपर देखना और उसको मार्क करना. वहां पे लिखा हुआ है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन. क्या बनता है सर? कहाँ पे लिखा है सर? मिल ही नहीं रहा. पेज नंबर बता दीजिए. कुशल कौन सा बुक यूज कर रहा है तू? सलीना? सेलिना नहीं सर, ये वाला. सर कुछ नहीं कर सकते सर, नहीं है सेलिना वाला. अभी तक स्कूल वाला बुक प्रोवाइड ही नहीं किया. अब वॉल्यूम के मैंने इतना बाहर नहीं किया जितना टेक्स्ट बुक को किया है, बिकॉज
हाँ सर, और एक बार बता सर, बता दीजिए सर, मिल गया। और लास्ट टाइम भी बाद में निकाला है। ओके, अब इसके अरे बाद मैं तुझको क्लास से बाहर निकालूंगा और एक लेक्चर के लिए तुझे बाहर रखूंगा, तब तू पूरा आराम से बाहर निकालेगा ना। अरे सर, ये सेलिना का नहीं मिला है Not सर, going to say you इसीलिए। anything, you find out where it is written now. Okay, so here uncontrolled cell division leads to tumor. Okay, so then it's like you are driving a car, brake fail हुआ, the chances of saving is less, accident is more. Okay, exactly same thing. Cell divide होते रहता है and it stops certain point में, but कभी कभार इस cell division stop भी नहीं होता है. So there is no cycle, मतलब no break on this cycle. तब accident होगा. What is accident? Tumor leading to cancer. I hope tumor और cancer में फर्क पता होगा. Is tumor a cancer? Maybe. Is cancer a tumor? पहला ट्यूमर बनता है और वो कैंसर होता है. अगर स्प्रेड हुआ तो कैंसर, वरना ट्यूमर. Am I clear? That is uncontrolled part. उसके बाद लिखा हुआ है सेल प्रोडक्शन एंड सेल डेथ, नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस, तो लीव इट. उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दिया हुआ है सेल डिवीजन. अब यहां से थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर स्टार्ट्स. पहला क्रोमोसोम हो गया, फिर सेल साइकिल हो गया. तो क्रोमोसोम से एक बड़ा क्वेश्चन आता है डीएनए का, इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा सेल साइकिल का. अब तीसरा जो आएगा वो है द सेल डिवीजन which are divided into various phases. So अब अपना टेक्स्ट बुक बंद करना and focus on to the board part. What are the two types of cell division which are going to study? So there are two types of cell division. One we say as mitosis and another we say as meiosis. Book के end में they have given you differentiate. So वहाँ पे मैं वो नहीं करूँगा. First, we'll try to understand the basic difference. When I say mitosis or mitosis is also referred as multiplication division, whereas meiosis is referred as reduction division. So what is multiplication and reduction? The most important significance of mitosis is the chromosome number remains same. So chromosome number is same. 46 का डिवाइड होने के बाद भी 46 ही रहेगा. Whereas in meiosis, the chromosome number reduces to, so 46 का 23, 50 का 25. That is what is mitosis and meiosis. Both the processes, whether it is a mitosis or whether it is a meiosis, both of them has the same phases. So we have something known as mainly divided two parts. Karyokinesis and cytokinesis. So one mark question, normally not asked, but kabhi kabhi, board ka expectation hai. What is karyokinesis and what is cytokinesis? And अगर आपका लक कुछ ज्यादा ही जोरों पे होगा तो जो आज का पेपर आया था उसमें पूछा था. If you are seen today's biology paper 10th standard, paper was damn easy. जो expect भी नहीं किया था उतने questions पूछे. And the worst of the worst was हम पढ़ाते वक्त population के ऊपर इतना focus नहीं करते. Population का बड़ा एक 7 या 8 मार्क का population. Basic questions बोले, showing that is more of बच्चे को marks देने हैं. Okay, paper is easy unless you learn properly. So what is karyokinesis and what is cytokinesis? All the activity will lead to the nuclear division is known as karyo. Karyo matlab nucleus, kinesis matlab division. So all the activities wherein is a division of the nucleus is karyokinesis. The division of the cytoplasm. Karyokinesis followed by the division of the cytoplasm constitutes the cytokinesis. Am I clear? Now, इन दोनों में से further, the karyokinesis is broadly divided into 4 phases. Prophase,
metaphase, anaphase and telophase. उसके बाद followed by telophase is cytokinesis. Cytokinesis में अपन दो चीजें पढ़े. Cytokinesis is separate for the plant and separate for animals. So in short, we are studying prophase, metaphase, anaphase, telophase in terms of mitosis and followed by cytokinesis. For plant अलग होगा, for animal अलग होगा. Am I clear? Now, generally talking about mitosis and meiosis. Mitosis में आएगा karyokinesis, उसके अंदर आएगा prophase, metaphase, anaphase, telophase, followed by cytokinesis. But meiosis में ऐसा नहीं होता. Meiosis is divided into two parts. Meiosis is divided into two parts. Meiosis 1, meiosis 2. Okay? ये syllabus में नहीं है पर book में लिखा हुआ है in a blue box. So there is a meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 is further divided into prophase, metaphase, anaphase, telophase. आगे 1 ऐड कर देना रोमन. Prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. Cytokinesis यहाँ पे होता नहीं है because it is still in this part. यहाँ पे proper cytokinesis होता नहीं है. Immediately follows the meiosis 2, which is having again prophase, metaphase, anaphase and telophase. Okay? तुम्हारा नसीब अच्छा है क्या बोर्ड बाकी सब कुछ डाल के रखा है पेपर टेक्स्ट बुक में. अननेसेसरी जो इतना होना भी नहीं चाहिए. Absorption and all these things. ये डाला नहीं है. The moment they would have put this part, it would have plug out your heads. 11th में है, 10th में है. Reason? इन दोनों सिंपल है पढ़ने के लिए, पर दिमाग इसी में आउट करेगा. Further divided into 5 steps. So leave it. Am I clear? Okay. अब children, syllabus point of view, we are not studying at all this. ये हमें phases बिल्कुल नहीं है. But we generally हमें meiosis की summary पढ़नी, जो उन्हें significance के अंदर किया. तो significance के अंदर 2 point दिए, उसमें इसका एक summary पढ़ना है. That's it for our syllabus. पर mitosis हमें पूरा पढ़ना है. All the phases. Am I clear? Yes. Okay. So we will be drawing the diagram. Okay. Along with the explanation part. The diagram drawing is part which part में दिखा. So when I say karyokinesis etc. Now I want you to open a textbook. शायद मैंने mark करवाया था पहले भी. कुछ words delete करवाए थे. करवाया था कुछ. ओके, तो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको फिजिक्स के. एनिमल्स का प्लांट्स का डायग्राम दिया हुआ है. डायग्राम के नीचे हेडिंग्स दिए हुए हैं, मतलब बीच में एक डायग्राम के बीच में हेडिंग लिखे हुए हैं और एक बाजू में कंटेंट के हेडिंग लिखे हुए हैं. मिले कंटेंट हेडिंग इज नथिंग रेड और ऑरेंज, रेड कलर रेड. Okay, and that headings which are given as A, B, C, D लिखा हुआ है. Okay, then first and the foremost thing, at no point you are writing late word in the answer. Late और early हमारे syllabus में नहीं है. So if you write that word, you are at loss. आपके marks जाएंगे. ये आपके टीचर ने भी बोला होगा. यस, ऐसा होगा ही. बोला क्लास में था. Then now why we are not using this word?
हमारा सिलेबस डिटेलिंग नहीं मानता, हमें बेसिक आइडिया मांगता। द मोमेंट यू राइट अर्ली एंड लेट, तो कई जगह पे मार्क्स मिल भी जाएगा एक बार, ये बिकॉज डजंट मेक अ सेंस, मतलब बच्चे ने लिखा है ठीक है मार्क मिलेगा, पर प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा इस, मान लो इसमें एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डायग्राम दिया जाएगा एंड द लास्ट आइडेंटिफाई द गिवन फेस, आपने आइडेंटिफाई किया क्या इट इज अ लेट प्रोफेस, अपने लिए वर्ड है नहीं पर आपने लिखा लेट प्रोफेस, लेट प्रोफेस, तो आपने वर्ड लिखा लेट प्रोफेस। उसके बाद का क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द स्टेज प्रायर टू दिस एंड ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम। ओके, तुम क्या ड्रॉ करोगे, अर्ली प्रोफेस, लिखोगे अर्ली प्रोफेस, ड्रॉ भी अर्ली प्रोफेस, स्कोप ऑफ सिलेबस अर्ली लेट वर्ड ही, बोर्ड एक्सपेक्ट क्या कर रहा है इंटरफेस, तुमने ड्रॉ किया अभी भी प्रोफेस, सो देन यू आर एट अ लॉस। सो प्लीज रिमेंबर, आप अर्ली और लेट वर्ड पढ़ना ही नहीं है, सो फॉर यू एनीथिंग इज देयर इट इज प्रोफेस या एनाफेस, नो अर्ली एनाफेस, नो अर्ली लेट एनाफेस, मेटाफेस में है नहीं, टेलोफेस में भी है नहीं, so दो ही फेज में है अर्ली एंड लेट, so you will only use prophase, metaphase, anaphase and telophase. Am I clear? Yes, sir. Everybody without a next lecture we will be drawing the diagrams. Okay, before I start with the diagrams, पहले 5 minutes I will definitely ask questions. Okay, and then I will see to it at your house. क्या आज जितना पढ़ाया उतना, सो अबव सेल डिवीजन जितना भी पढ़ लेना, सेल डिवीजन मतलब अबव सेल डिवीजन मतलब सेल डिवीजन का चैप्टर के स्टार्ट से लेके सेल डिवीजन तक के, उसके बाद का तुझे पढ़ना है योर चॉइस, तो उसका भी पूछ लूंगा। मैंने पैक करने के लिए बोला, जाने के लिए नहीं बोला है। एक मिनट बाकी है, अब तुम्हारा ये भी होगा डाउट का सर 1 मिनट तो है सर, ये ना क्या फर्क पड़ता है, तो 1 मिनट का क्या डिफरेंस होता है वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, व्हाट 1 मिनट मैटर्स और नॉट मैटर्स, टाइम लगा के बताऊंगा 1 मिनट का कितना फर्क है। सर लीव कर रहे हैं।